Well, I would ask my camera person to just come this side and focus there. This is the very high rise inside which the ED officials have gone. And, on the 5th floor, flat number 503, the name of the residential complex is Fort Oasis. It's a very upscale property and it is right in the heart of the city. Now, over here, the property is very significant. Why? Because the property allegedly had been acquired from the promoter, not on the name of Partha Chatterjee, but by Partha Chatterjee. Not on the name of Arpita Mukherjee, but by Partha Chatterjee. What you're learning from sources, that when the promoter was building this apartment, which came up, on a marsh land, and when this property came up, he allegedly had asked for one particular flat from the promoter on the name of his daughter. Now, that name change never happened, but this property had remained as almost like a Benami property on the name of somebody called Mr. Junjunwala. For the sake of sanctity, we are just not disclosing the first name because that's what Enforcement Directorate officials should confirm. But the last name of that individual is Junjunwala, so referring to him as Mr. Junjunwala, on whose name the property is at least being identified inside the housing complex and in the register of the maintenance. So that man, he is the rightful proprietor of the property, even though on pen and paper, in black and white, the property does not belong to him either. And that's what Enforcement Directorate officials have learned. Over the past couple of months and close to a year, nobody actually visited this property. But then Enforcement Directorate officials came down here. They soon informed local police officials. They have also come down, and you're also being given to understand there is one more property in this particular complex where ED raids are currently on, where too the local deployment from local police have happened. Just not that, they have also informed the special branch, they have also informed the local police station, and the local police station officials and the special branch have been taken up on the 5th floor in front of flat number 503, which is the flat number, and possibly they also want to keep a local witness from the local police while they break open the door and go inside, because this property on pen and paper is not named after Partha Chatterjee or Arpita Mukherjee, so that could be part of the formality. So at this point in time, the raids are on. It is a high-rise, it is an upscale property, it is in a very posh locality. It's in Hajra, in South Kolkata, in heart of the city. And mind you, this is not the only property which has been raided by Enforcement Directorate. I have in fact lost count. To be very honest, Poonam, in the past couple of days, several properties have been raided by Enforcement Directorate. Most of them are named after Arpita Mukherjee. There are a couple of them which are named after Partha Chatterjee. There are properties which have been acquired by Partha Chatterjee from the promoter, in exchange of as a quid pro quo, if I say so. And most importantly, this particular property, which is not named after Partha Chatterjee, yet ED officials have come down. We have to now wait and see what really happens inside. It's been close to 2 hours. Absolutely. What recoveries are made and what really is the connection between Partha Chatterjee, Arpita Mukherjee and the person who actually owns this flat in that upscale locality there in the heart of Kolkata. Stay on with me, because it's not just the investigation that is gathering pace. The politics over this is also escalating. Let's listen into a reaction coming in from the BJP chief of the state. हमारे साथ है बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार जी। सुकांत जी, आज जब पार्थ चटर्जी के ऊपर में एक महिला ने नाराज होकर चप्पल फेंक दिया, चप्पल से मारा उसको। देखिए, ऐसे चीज़ों को तो हम समर्थन नहीं करते, लेकिन हम इससे भी मुंह फेर नहीं सकते कि ये बंगाल की जनता की जो अंदर जो आग है, वो आग दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों ने इस कटमनी का बिजनेस नहीं बंद किया तो आगे आने वाले दिनों में हर टीएमसी के नेता के साथ ऐसा होगा। एक साधारण सी महिला, आप अगर देखेंगे फोटो जो फूटेज आया है, एक साधारण सी महिला सरकारी हॉस्पिटल में जो दिखाने के डॉक्टर दिखाने के लिए जाती है, वो अपना चप्पल उतार के मार रही है मिनिस्टर को। तो समझिए एंगर कितना है, आग कितना है। जनता पूरी तरीके से इस सरकार से विश्वास खो चुकी है और इस सरकार की मोरलिटी नहीं है, मोरल राइट नहीं है इस पद पे बने रहने की। वो महिला कह रही है कि बड़ी मुश्किल से खून पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं और ये लोग भ्रष्टाचार करके वो लूट लेता है, गरीबों का पैसा लूटता है, अय्याशी करते हैं, गाड़ी में घूमता है। देखिए, बंगाल में क्या है, जो आदमी डेली लेबर का काम करता है, मजदूर का काम करता है, वो भी अपने बच्चे को आधा पेट खा के पढ़ाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बेटा एक बार पढ़ जाए तो बेटी पढ़ जाए तो कभी वो टीचर बनेगा, कुछ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और बंगाल में शिक्षक की नौकरी को दूसरे नज़रों में देखा जाता है, शिक्षकों को हमेशा सम्मान दिया जाता है। लेकिन इस सरकार आने के बाद से जो करप्शन हुआ, उसने
इस शिक्षा व्यवस्था को, सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है, जहाँ पे गरीब के बेटे पढ़ते हैं, अमीर के बेटे अभी नहीं पढ़ते, उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को इन लोगों ने खत्म कर दिया, गटर बना के रख दिया। इस गटर को साफ करना है। जनता उतर चुकी है, मुख्य अपोजिशन हम हैं, हम उतर चुके हैं रास्ते में। इस सरकार को झुकने पर हम मजबूर करेंगे, घुटने पे ला कर रखेंगे। ये सुविंदर मिले थे, गृह मंत्री साहब को मिले थे, उसमें कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा ऐसे लोग का नाम दिया है, आप लोगों ने लिस्ट दिया है जो कि करप्शन करते हैं, वहाँ पर टीएमसी को पैसा देते हैं। कौन है? देखिए, हर जिले में आप जाएंगे, हमारी बात विश्वास करने की जरूरत नहीं, आप फील्ड में चले जाइए, हर जिले में लोगों से पूछिए, वो अपना आइडेंटिटी रिवील किए बिना बता देंगे आपको कि जिले जिले में कौन कलेक्टर है। हर जिले में टीएमसी का कलेक्टर है जो पैसा उठा के थ्रू चेन, जिसे मैंने नाम दिया कटवानी फूड चेन, उस चेन के थ्रू वो ऊपर तक पहुंचता है, तृणमूल टॉप लीडरशिप तक पहुंचता है। और धन्यवाद। साफ तौर पे ये कहना है कि जो वहाँ के जो आम लोग हैं, गरीब है, अब उसका गुस्सा टीएमसी सरकार, उनके मंत्री और उनकी करप्शन को लेकर अब सामने आने लगा है, और यही का नतीजा है कि एक महिला चप्पल फेंककर मारती है पार्थो चैटर्जी को। अमित कुमार, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली। Fight over that is only peaking now, but raids are continuing in multiple locations across West Bengal. Even as we speak, the Enforcement Directorate is trying to build a watertight case.